वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैनली किचन। होप एवरीवन इज फाइन एंड सेफ। आज हम बनाने जा रहे हैं अनदर वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी विच इज़ मसाला फ़िश फ्राई। नाउ इसमें मैंने रिवर फिश यूज़ किया है विच इज़ रोहू। सो हम उसको यूज़ करके ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं। ये रेसिपी में जितने भी फ्लेवर्स हैं वो जो हम फ़िश फ्राई करेंगे और जो हम उसके लिए मसाला तैयार करेंगे उसमें से ही आ रहा है। इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं है, इट्स अ कंप्लीट ड्राई मसाला फ़िश। ये जो हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं इट गोज़ वेरी वेल विथ रोटी चपातीज एंड विथ योर राइस एंड दाल एज वेल। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड let's hit the kitchen and start cooking. Before that, please do not forget to like, share and subscribe to our channel. So let's start cooking rohu masala fry. So fish fry करने के लिए we have taken half kg of fresh rohu fish. For coating we have taken 1 bowl of corn flour. We will add salt as per taste. We will add 1 tablespoon of red chili powder, a half tablespoon of hing and mix it nicely. अभी हम फिश के पीसेस को इस कोट में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे on both sides and हम उसको फ्राई करेंगे. So I have taken mustard oil. Mustard oil जब गर्म हो जाएगा then we will put the fish pieces in it nicely and we will fry it nicely till they are crispy brown. So the fish fry होने के बाद this is how they will look. Now we will keep them aside and we will start the next phase of cooking. So next cooking के लिए we have taken mustard oil on a pan. Mustard oil गर्म हो जाएगा then we will add 1 tablespoon of methi seeds. Then we will add around 8 to 10 pieces of green chilies. Now chilies आपको कम रखना है ज़्यादा रखना है, it all depends कि आपको कितना चिली खाने की आदत है. So depends all on you. A half tablespoon of हींग and उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया है of onions and garlic. So around 4 to 5 pieces of big onions and around 15 to 20 pieces of garlic जिसका हमने पेस्ट तैयार किया है. We will cook the paste nicely. And जैसे जैसे वो कुक होता जाएगा we will add our next ingredient in it which is finely chopped tomatoes. So I have taken around 3 big tomatoes finely chopped and हम उसको कुक करेंगे अच्छी तरह with the paste. Now we will add salt as per our taste and again cook it nicely. Right now we are cooking it on a medium flame. So you can see that the masala is nicely cooked. हल्का हल्का oil भी छोड़ रहा है मसाला. So now we will add our next ingredients which are the dry masalas. We are adding 1 tablespoon of haldi powder, 1 tablespoon of half grounded red chili powder, and then we will squeeze 1 lemon juice in it. So now we will cook the dry masala with the paste nicely ताकि मसाला भी अच्छी तरह कुक हो जाए.
Once the masala is cooked nicely and you will see a little bit of oil coming out, then we will add the final ingredient, which are the fish pieces in it, and then on a low flame we will keep on cooking for another 5 to 10 minutes. Now fish pieces add करने के बाद we will mix the masala nicely with the fish, and we will keep on cooking it for another 5 to 10 minutes on a low flame. So it's almost 5 minutes now. जो मसाला है और जो fish है वो अच्छी तरह cook हो चुका है. Now we will add our final ingredient in it, which is 2 tablespoon of dry kasuri methi. So kasuri methi हम add करेंगे and then we will just mix it up nicely and switch off the flame and let it settle down for another 5 to 10 minutes, and then it's ready to be served. So friends, this is how our fish masala fry will look like. It's a very amazing recipe, very amazing dish. Please do try this at home. And friends, do subscribe, like, share and comment to my channel. And more videos will be coming out every week. Thank you.